हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस, प्रोटोजुआ और जुआ लार्वा के बारे में पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में क्रस्टेशियन लार्वा के दूसरे फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज साइप्रस लार्वा। साइप्रस लार्वा develops from Nauplius larva. Its body is enclosed in a bivalve shell. A median and two compound eyes are present, in which anterior antennae are four-jointed and each bears a characteristic disc. Posterior antennae are absent. 6 pairs of biramous thoracic appendages are present. Its short abdomen ends in a caudal fork. The larvae contains a mass of germ cells. It occurs in Saculina. Next is Mysis larva. In Peneus, the Julia larva, instead of converting into the megalopa stage, molts into the post-larval Mysis larva. It has 13 pairs of appendages. All the thoracic appendages are biramous with flagellar exopodides which take up the locomotory function. The abdomen develops similar to that of the adult form with 5 pairs of biramous pleopods and a pair of uropods and a telson. The mysis larva metamorphoses into the adult prawn by the loss of the exopodides on the thoracic legs. Next is megalopa larva. In crabs, the zoea larva or metazoea larva passes through successive molts into the post-larval megalopa stage. It has a broad and crab-like unsegmented cephalothorax. The carapace is produced anteriorly into a median spine. The eyes are large, stalked and compound. All the thoracic appendages are well formed, of which the last pairs are uniramous. The abdomen is well formed, straight and bears biramous pleopods. Next, Phylosoma larva. In the rock lobster, the newly hatched larva is called the Phylosoma larva or glass crab. It is a greatly modified mysis stage. It is remarkable for its large size, extremely flattened and leaf-like delicate form and glassy transparency. A narrow constriction demarcates the head from thorax. A large oval carapace covers the head and the first two thoracic segments. The eyes are compound and borne by large stalks. Only anterior 6 pairs of thoracic appendages are present in the newly hatched larva. The first thoracic appendages or maxillipeds are rudimentary or absent, and the second are uniramous, succeeded by 4 pairs of very long and biramous legs with exopodides. Last 2 pairs of thoracic appendages are usually absent. Abdomen, though indistinctly segmented, is very small and limbless. Phylosoma undergoes several molts before reaching the adult form. Next is Alima larva. The so-called Alima larva of Squilla hatches out from the egg directly. It is a modified zoea larva form. It is a glass-like transparency and occurring in a
large numbers in the plankton. It has a cylinder form and a short and broad carapace. All the head appendages are present, but only is 6-segmented, having 4 or 5 pairs of pleopods. The Alima larva differs from the Zooea larva in the armature of the telson and a very large raptorial second maxillae pedes. Significance. According to the biogenetic law proposed by Haeckel, ontogeny recapitulates phylogeny. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जंतु का जीवन चक्र उसके इवोल्यूशनरी पीरियड के हिस्ट्री में पाए जाने वाले एडल्ट स्टेजेस का रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नोप्लिस लार्वा की अवस्था सभी क्रस्टेशियन जंतुओं में पाई जाती है और इसी पूर्वज से फाइलोजेनेटिकली ढंग से सभी क्रस्टेशियन जंतुओं का इवोल्यूशन हुआ है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि दूसरे लार्वा, जूया, मेगालोपा एटसेट्रा नोप्लिस के प्रकार के पूर्वजों से ज्यादा विकसित क्रस्टेशिया के विकास की स्टेजेस दर्शाते हैं। लार्वा अवस्थाओं के अध्ययन से अलग-अलग ग्रुप के जंतुओं में एफिनिटी और होमोलॉजिस का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह समझा गया है कि अधिक निकट जंतुओं के लार्वल स्टेजेस में ज्यादा समानताएं पाई जाती हैं। इस तरह से हमने क्रस्टेशिया के डिफरेंट लार्वल स्टेजेस को हमने पढ़ा और उसके सिग्निफिकेंस को समझा कि किस तरह से इसका इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है और उनका जो डेवलपमेंट है किस प्रकार से होता है। थैंक्स क्लास।